धन्यवाद। सर्वप्रथम म यो कालिङ्गा लिटरेरी फेस्टिभलका संयोजकहरू र व्यवस्थापन समितिलाई एकदमै आभारी दिन चाहन्छु र धन्यवाद गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम अहिलेसम्म एकदमै उत्कृष्ट रूपमा चलिरहेकोमा। र म अब त्यही सँगसँगै अब आफ्नो यो कार्यक्रम सुरु गर्न गइराखेको छु र अहिलेको सेसन छ आर्टिस्टिक इन्डेक्स फर हाउ CSR shapes and sustain कल्चर एन्ड लिटरेचर। हाम्रो कल्चर र लिटरेचरलाई CSRले कसरी अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा कसरी फैलिरहेछ र तिनीहरूले के गरिरहेछन् त्यसबारे अहिले हामीले चर्चा गरिरहेछौँ र चर्चा गरि नै रहनेछौँ। अब सरहरूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम सरहरूको विचारमा यो CSR भनेको चाहिँ नि अब कस्तो हुनुपर्छ? Yes, sir. What is CSR? What is CSR? Corporate social responsibility. Actually, yes, by definition, it has been given very recently the shape, but in the heart, it has been since inception of industry. So I belong to Indian Railway Service 96 batch, and Indian Railway since 1884, I should say, has been promoting social class, has been rendering corporate social responsibility by in the form of creating a sports facility in the country, creating literature, giving them opportunity in the job, and promoting culture as well. So, like in Tata, if you say example in India, Tata has been doing CSR activities since the day they have constructed Taj. Since then, before even steel manufacturing. So the whole city of Jamshedpur is an example of CSR itself. So later on, the government thought that some of us are not sharing their responsibility fully, and that is why CSR has been formalized in such a manner that 2% of the profit of any organization has to be a part of corporate social responsibility. Okay, so I conduct this program in English as one of our speaker is. मैं शायद पूरी तरह समझ ना पाऊँ, समझ तो रहा ही हूँ, but I think it's good to English, Hindi, anything you want. Yeah. Okay, sir, I would like to ask one question. So, how can corporate social responsibility initiate effective support and promote the traditional culture in any traditional society? Like, let's say in Kathmandu, we have Newari culture as its indigenous culture. So, and if we talk about Far West region in Nepal, we have Doteli culture, as well as in Karnali region, there are different cultures. Similarly, there are different types of culture in different regions. So how can we promote those culture through CSR? Actually, sir has already discussed, touched some more point on corporate social responsibility. Culture and culture, heritage. literature. Okay. Culture and literature, actually, so I better speak in Nepali. है राष्ट्रको गहना भन्छौँ कि हामीले without ornaments यस्तो मान्छे के भन्छ राम्रो देखिँदैन नि. So for the sustainable development of any country, हैन, country को identity त हुनु पर्यो नि, के हो हैन. Without identity, जस्तो when I was studying journalism, one lady came from USA. उसले मलाई एक दिन एउटा चीज भने के रायोको साग, आमाको मुख हेर्ने दिन, बुवाको मुख हेर्ने दिन. So we Hindu highly or honorably celebrate आमाको मुख हेर्ने दिन, आमाको खुवाउने औँसी, बुवाको मुख हेर्ने दिन. This is our tradition. Father's Day, Mother's Day. So they don't have that type of culture. So we are culturally rich. Country को identity के हो? Country को prosperity कहाँ जान्छ भने यदि culture छैन, literature छैन, साहित्य छैन भने तपाईं हामीले अहिले पनि भन्छौँ रविन्द्रनाथ ट्यागोरले गीताञ्जली लेखे पछाडि एसियामा के भयो? ओहो
यहाँ पनि छ, साहित्य लेख्नेहरू छ भन्ने कुरो भयो भनेपछि के रहेछ त, कन्ट्रीलाई चिनाउने रहेछ. सो गभर्मेन्टको पनि एउटा दायित्व के हो भने कल्चर लिटरेचरलाई प्रमोट गर्नु पर्यो, प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नु पर्यो, सो द्याट कन्ट्रीको एउटा आइडेन्टिटी अगाडि बढ्छ र कन्ट्री अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई. Thank you, sir. So, as you talked about culture, institutionalization of culture, so here is one question. How can business help those culture to uplift themselves? Because business, they seek profit. And if we talk about private institution, they only invest in those areas from where they can get profit. And as you know about culture, sometimes it's not profitable. So how can they come up with some good ideas so that they can earn profit as well as boost up those culture? I know you are from business family. Yes, that's why you are asking these questions. Okay, one example I would like to give you. Nepal Airlines, so that is the backbone of Nepal, that freely, used to provide ticket for cancer patient. And we have one restaurant, Elena's Bakery. They usually recruit those people physically disabled, cannot speak. So that types of employee they recruit. And sir has already told Jamshedpur हुँदैन थियो if Tata नभएको भए. Tata thought that if I am taking everything from Jamshedpur, why not to build, why not to develop? So society र business यो नङ र मासु हो. If they operate separately, if they go different way, है business sustain गर्दैन. So first of all society को norms, society को values लाई businessman, business organization ले बुझ्नै पर्छ, दिमागमा राख्नै पर्छ र प्राइमरी फोकसमा राख्नु पर्छ. That will be sustainable. Business can go ahead, grow, but sustain गर्न सक्दैन. Society को support हुनु पर्यो. CSR is the pull. It bridges the gap between society and business house. Yeah. Okay, so I want to move to sir. So culture and literature, they play major role in boosting identity of people or any community. So do you think how this culture and literature can, along with business, they can bring some changes in some culture which are bad or which are not called as sustainable culture? Can they bring some sustainability in those culture? Yeah. If you go by the definition of corporate social responsibility, so it is something like कि ताली दोनों हाथ से बजती है. Otherwise, there will be no sound. If a businessman will do only business, then they will ultimately boils down to downfall of the business. And normally what happens, there is a communication gap always. And in anything, leave apart this corporate social responsibility, the problem of the whole world is communication. So in my view, still we are struggling in understanding corporate social responsibility, and even the government mandate is very clear that in India, government issue specific areas where 60% of the CSR fund has to be expanded in only those areas, and 40% is totally in the hand of the corporate, particularly the public sector units. Okay, so but I am finding that the institutions like KLF or JLF or XYZ, lot of people who are promoting culture are also not understanding the economics and dynamics of CSR approval process. So rather taking cue from your question, I would like to give a hint or explain such institutions that when they should approach such institutions, because the government institutions or public sector institutions are bind to do the expenditure, and they are searching for a good people. Okay, so normally what happens, till September, your all accounts gets cleared. In all public sector, you will understand that unless it is listed company, the time limit given is September
So September is the AGM, and once in AGM your accounts is freezed, then only your profit percentage is freezed. And once your profit percentage is freezed, your CSR fund is freezed. So our application or our approach to CSR fund should be much before June or July, so that a company who will give you money should put up all proposals to their board, because it is not something like a kitty where you go and they will issue a check. It's not like that. The process is very cumbersome, that there is a 3-tier society in each institutions, where your proposal will be summarized and put up to the board, and board will be giving you money only once their accounts is cleared. Okay, so normally what we do, like अगर मुझे फरवरी में अपना प्रोग्राम करना है तो हम जनवरी में अप्रोच करते हैं. So we have to understand that our annual planning, like if I take example of KLF, and KLF Bhubaneswar has to do his function in February, then they should approach all CSR funded company in June only. Then it will take 4-5 months. Then government sector will be able to provide you full money, because I know I am a chairman of one of the PSU, and I know we are searching proper institutions, that where should I invest, and we generally float EUI, expression of interest. So any interested person should go through the EUIs floated by BHL, Coal India, Braithwaite, and all such institutions, and then they should approach on time. Okay, and there should not be any hesitation. They should meet their CMD directly. I found that they don't approach properly, and they just send mail, and they think that their job is done. That is not the case. You should approach one-to-one, and CMDs are eager to give you proper interview, proper session, everything. So I would like to add one more point. So we didn't have any clear-cut rules and regulations regarding CSR. So I belong to especially insurance company. Yes. Now we have to spend 1% profit to 2% of and profit. the regulator has clearly directed us. We Yes. need to spend this place. So now we can see. First of all, previously it was not institutionalized. So it was totally depend on companies. Yes, Now yes. we have different sectors. We cannot promote our name and logo, especially. So Yes, in the name yes. of CSR. Yes. So many companies are promoting themselves. But In fact, to add your point, one has to be CSR 1 registered in India. अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको भी अपने आप को CSR 1 में रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, ताकि अब जो है वो फ्रेमवर्क बहुत दूसरे तरह का हो गया है, और वो जो कंपनी दे रही है पैसा उसका भी ऑडिट होता है, और अगर हम जनरली पैसा किसी को दे देंगे तो आई विल बी क्वेश्चनेबल. सो threats has been needed very clearly that the taker has to be registered in CSR 1, and giver has to give money only to those firms or those institutions who are registered with CSR 1 only. This has been implemented in 2019 only. Okay, thank you, sir. So I would like to move to next question. So to the sir. So my next question is, what kind of ethical considerations should we consider before applying CSR? Yeah, anyone can. देखिए नॉर्मली पहले क्या होता था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस भी नहीं करते थे, जो जैसे 1-to-1 जैसे इन्होंने बताया कि कोई किसी को अप्रोच किया और हमारे पास किटी में पैसा है वो दे दिया. अभी क्या हुआ, CSR पॉलिसी कंपनी को बनानी है, उसको अपने वेबसाइट पे डालना है, डाल करके आपको नॉर्मली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब टेंडरिंग प्रोसेस की तरह जाना है. फिर टेंडरिंग प्रोसेस में आपको थीम देना है. थीम में माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द थीम, लाइक आई एम टेलिंग, एजुकेशन इज वन ऑफ द, रिसर्च इज वन ऑफ द थीम. पैसा जो है वो रिसर्च के लिए भी खर्चा हो सकता है, कला के लिए खर्चा हो सकता है, आर्ट के लिए खर्चा हो सकता है. तो अभी क्या है, कंपनियों की ये बाध्यता आ गई है कि आपको अपना किस थीम पे कितना पैसा ब्लॉक किया है. मान लीजिए मैं 100 करोड़ की कंपनी हूं, और 100 करोड़ का मतलब अगर 2 करोड़ का CSR, तो 2 करोड़ का CSR में 60% मान लीजिए 1,20,000 मान लीजिए हो गया, तो 1,20,000 का जो मनी है वो ब्लॉक्ड होगा थीम विच हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, whichever
is the country, but 80 crore will remain with you. So that you have to decide that which theme you are promoting. Either it depends upon the person. Like if Tata is there, Tata will promote something else. Jindal will promote something else. Reliance will promote something else. Okay, so the new culture also came up that they started converting their CSR money into normally education in schools. They are started running in schools in jungles for Adivasis, for other sectors. Okay, so what your question was earlier, that the company has to define everything, that how they they are going to do expenditure, for which EUI will be published in such a such month. Once accounts is cleared, then that means that you are abiding by proper ethics. You are following norms of tendering, norms of awarding contracts, sort of things. Okay. I have already, I think, answered you. Yeah. Yes. So regulator has directed us to in which sector we have to spend, how much to spend, how to spend, and we have also already made CSR policy, as sir has already marked on this point. So without we discretionary, we don't have any discretionary power, so we cannot spend on our own will. So there are some rules, some guidelines, so we need to follow it. That is the ethical point. बेसिकली ये कहना एक्चुअली हर चीज इवॉल्व कर रहा है. ये जो CSR भी है ना, अपने आप में इवॉल्व करके एक परफेक्ट गाइडलाइंस की तरह बन रहा है. आई थिंक लास्ट 5 साल में बहुत रिफॉर्म्स हुए इसके अंदर, और बहुत क्लैरिटी आई. पहले क्या था कि कुछ भी हम लोग, कुछ भी किसी को पैसा देना है उसको CSR मान लेते थे. ऐसा नहीं है. अभी एरियाज हैज बीन डिफाइंड, और इसमें अगर पैसा खर्चा नहीं किया तो PM फंड में चला जाएगा. अभी क्लियर. Currently it's in evolving stage. Yeah. I'll say that there is a gap of communication. Policy is clear, but the policy has not reached people like Rashmi. He's coming, he's front. People, he will be the most trusted person for CSR, but the policy has not reached people like him properly. They have to be there should be a seminar, there should be conference for all CSR1 registered firm, and we need to educate them how to approach and when to approach. Okay. So I would like to move to context of Nepal. So we have many education institute where arts are taught, where literature is given more priority, like MA or Master of Arts, Bachelor of Arts. So how can this business organization, they can help them through CSR? Because as we speak about Nepal, art are not considered as beautiful as commerce or engineering or anything. So question is related to Nepal. I think I should reply in Nepali. Okay. Sure, please. So हेर्नु सर, अब के कस्तो छ भने, मैले अघि पनि भने, आई नो यू आर्ट्सको कुरो गर्छौँ है, लिटरेचरको कुरो गर्छौँ, तर हाम्रो पढाइ बहुत कम होता है नेपाल में. सो कॉमर्स और साइंस ये सब चीज की पढ़ाई होती है बहुत कम, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है. अभी तक लोगों को पता नहीं कि ये चीज लिटरेचर से भी आदमी सेल्फ सस्टेन हो सकता है. सो कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी में है, सिलेबस में तो है, लेकिन थोड़ा वो कमर्शियली, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनली हाईली एक्सेप्टेड नहीं है. सो अब ये कहीं ना कहीं एक सोचने का, एक ये ज़्यादा उसको रीथिंकिंग करने का ये टाइम आ गया है. सर जो बोल रहे हैं मैं जानता हूँ, एक कॉलेज नाम नहीं लूँगा, वो भी जानते हैं, मिड बानेश्वर में कॉलेज है, वो बेसिकली मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं. वहाँ का जो ओनर है बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी CSR की तरफ बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं. है कॉलेज हाईली वो पेड है, बहुत सारे जो जिसके पास कैपेसिटी वो पे कर सकते हो जाता है. वो कॉलेज का वो पब्लिक परसेप्शन बहुत अच्छा है. फिर भी सर क्या करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को आप फ्री में पढ़ाते हैं. मेरे ख्याल में वो एक ही पार्ट होगा ऐसा जो कुछ कुछ कर रहे हो CSR के लिए. ये आर्टिस्टिक और ये थोड़ा हमारा लिटरेचर के लिए, ये कल्चर के लिए मेरी तरफ से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अभी तक डेवलप नहीं हुए. जस्ट दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड. देखिए मैं इनके ऑल्दो ये नेपाल के लिए क्वेश्चन स्पेसिफिक है, लेकिन मैं इन जनरल सपोर्ट करूंगा इनके उत्तर को कि अल्टीमेटली देखिए दो तरह से काम होता है, एक दिल से होता है और एक इम्पोज करके होता है. CSR के लिए दोनों चीजें जरूरी है.
दिल भी होना चाहिए और टॉप का कमिटमेंट होना चाहिए. अनलेस टॉप इज नॉट कमिटेड, आप ये काम नहीं करवा पाइएगा. क्योंकि हर एक आदमी को पैसा प्रिय है, हर आदमी पैसा को घुमाना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं CSR में दूं और उसमें से एक किट्टी अपने पॉकेट में रख लूं. ये फैक्ट है, ये इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा होता ही है कहीं ना कहीं. ठीक है, तो जब तक कि टॉप जिस तरह का रिफॉर्म्स इंडिया में हुआ है, I must salute the leader there at this moment who has entrusted for CSR so much that even private company cannot get away so easily. वहां पे अभी जब ऑडिटर आते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनी ऑडिटर, बिकॉज 500 करोड़ के ऊपर के फर्म्स को आपको पता है कि ऑडिटर गवर्नमेंट के ही ऑडिट करने हैं. बैंक्स के ऑडिटर का भी डिफाइंड है कि कौन करेगा ऑडिट. ऑडिटर्स का भी अपना डेफिनेशन है कि कितना कितना कौन कर सकता है. तो उनके ऊपर भी उतना ही सर्विलेंस है इस समय. तो वो कमिटमेंट टॉप से आना चाहिए, हार्ट से तो आना ही चाहिए, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट टॉप का भी कमिटमेंट का उतना ही रिक्वायरमेंट है. Thank you, sir. So, as the theme is between business and business CRR and literature, so I would like to ask one question: that can literature help for any business person or any business organization to come up with some ideas so that they can connect themselves with literature, or literature can connect themselves with this kind of business organization? ये सबसे ज्यादा फर्टाइल माइंड ही लिटरेचर में है. ठीक है, तो फर्टाइल माइंड तो हमेशा पॉजिटिव चीजें देगा, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि हम फर्टाइल माइंड को यूज करें. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं. देयर इज वन पब्लिक सेक्टर यूनिट इन इंडिया, NTPC, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज आता है जब प्लांट चलाते हैं, बिजली का पावर जनरेट करते हैं, थर्मल पावर जनरेट करते हैं. तो उन्होंने क्या किया कि एक पॉलिसी चलाई कि हम 10 बेस्ट राइटर्स को उन्होंने कंट्री और अब्रॉड को बुलाया अपने पास, और बुला करके बोला कि भाई आप 3 महीने हमारे साथ रहिए और रह करके हमारा स्टडी करिए और स्टोरी बनाइए. ओपन, आपको मैं एडिट नहीं करूंगा, और ओपन स्टोरी बनाइए. ठीक है, और बेस्ट स्टोरी टॉप 3 को दे हैड गिवन अ गुड अवार्ड ऑफ 10 लाख 20 लाख 30 लाख सॉर्ट ऑफ. ठीक है, और वो जो स्टोरी बन के आई और उसमें जो फिल्म बना वो बहुत सराहा गया पूरे बाकी लोगों के द्वारा, और वो एक कल्चर जनरेट किया बाकी लोगों के लिए. मैं भी एक्स CMD इरफान सर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं कंट्री के, राजभाषा टीवी में रहे हैं. फिर उन्होंने जब जिस कंपनी का मैं अभी CMD हूँ उसमें टर्न अराउंड हुआ, हम 100 करोड़ की कंपनी थे, हमारे ही टीम के साथ जब मेरे नेतृत्व में ही 100 करोड़ 1000 करोड़ टच किया लास्ट 5 ईयर में. सो उस 1000 करोड़ की जर्नी को हम लोगों ने CSR के थ्रू, इरफान सर ने उसको पूरा एक फिल्म बनाया और काम किया. तो लिटरेचर, फिल्म, कला, ये बिल्कुल आपस में गुथी हुई चीजें हैं, और इससे बेहतर तो कुछ है नहीं. हर ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इसको एज ए टूल यूटिलाइज करना चाहिए टू सेंड अ गुड मैसेज टू सोसाइटी. Thank you, sir. So I would like to move to sir. So many business organizations, they do not enter account this literature, arts, culture in their strategic plan, business strategic plan. So I think that would be the reason for them not to invest much in this sector. So how can we help them to build this kind of strategic plan? Is it necessary for them to build this art-friendly business plan to help for other artists through CSR, or can they help without making any business plan? एक्चुअली तपाईँले जुन क्वेसन सोधिरहनु भएको छ त्यसको आन्सर पनि दिइ पनि राख्नु भएको छ. ठिक छ, प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छन् बिजनेस अर्गनाइजेसन, जहाँ प्रफिट छ. मार्केट छैन भने केही पनि काम गर्दैन. मेरो अङ्कलले भन्नुहुन्थ्यो, आदमी जुठा क्यों खाता है भन्दा मिठा के लिए. देयर सुड बी सम पर्पस के हुनैपर्छ है. अब नेपालको मार्केट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म पर्टिकुलरली सरको देशमा, सरको कन्ट्रीमा के छ, ह्युज कन्ट्री, पपुलेसन वरदान हुँदैछ, फिक्स फ्याक्टर अन्डर युटिलाइज छ. ठिक छ, त्यहाँ धेरै चिजहरू छ, मार्केट ग्रोइङ छ, वर्ल्डको एकदम फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी भएको छ, त्यहाँ त्यो सबै चिज पोसिबल छ. इन द केस अफ नेपाल आई थिङ्क त्यो अलिकति पोसिबल छैन, मार्केटै भाइबल छैन.
फिजिबल छैन, त्यति लेभलको अडियन्स छैन, प्रोडक्टिभ एजको सबै युवा युवतीहरू बाहिर छ है। तपाईँ आफै हेर्नुहुन्छ ब्याचलर लेभलको कलेज सबै रित्तिराखेको छ, पढाइ हुँदैन, स्टुडेन्ट्स आर फ्लाइ है, त्यो एकदम फ्लाइ दौडिराखेका छन्। त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हेर्नुहोस्, लेबरहरू हामीले खोज्नु पऱ्यो भने महँगोमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, हामीसँग काम गर्ने मान्छे छैन। नेपालको केसमा चाहिँ त्यही नै चिज चाहिँ अलिकति गाह्रो देख्छु म। यस, थ्रु CSR इट इज पोसिबल है, किन भन्दा सरले अघि पनि भन्नुभयो इट सुड कम फ्रम बटम, यहाँबाट आउनु, इम्पोज गरेको होइन, यहाँबाट आयो भने इफ यु डु एनी वर्क्स फ्रम यर बटम अफ यर हार्ट द्याट विल बी ग्रेट, अर द्याट इज पोसिबल भन्छु म है। CSR को थ्रु गऱ्यो भने कमर्सियली मलाई चाहिँ भाइबल छ जस्तो अहिलेको केसमा अलि लाग्दैन। Okay, sir. So I would like to ask for any one of you can give answer to this question. So is there any Bible steps that can be taken through any kind of programs, like for example, let's say this Kalinga literary program and other kinds of program that could help to manage this problem? देखिए, पहले तो हम कलिंगा को धन्यवाद दें कि हमें ये मौका मिला कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही स्टेज चाहिए, ऐसा ही बातचीत चाहिए, और ऐसा ही कॉन्फ्रेंस चाहिए, सेमिनार की तरह बातचीत चाहिए, जिसमें अवेयरनेस, जो मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की अभी भी कमी है। लेकिन मैं इससे इतर कुछ और भी बोलना चाहूंगा कि हम क्यों इंडिया को देखें या कुछ नेपाल, हम अल्टीमेटली ये CSR है किस लिए? अपना जो वैसे जगह जहां पैसा नहीं पहुंच रहा है वहां पे पूरे बिजनेस का कुछ पैसा पहुंचाने के लिए, जहां का अल्टीमेट पर्पस है हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, है ना, आर्ट और इसमें अगर पैसा नहीं, वहां पैसा पहुंचे, हॉस्पिटल में पहुंचे, रिसर्च में पहुंचे, जहां नॉर्मली पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। किसी किसी कंट्री का रिसर्च इट इज बिजनेस। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में रिसर्च खुद ही बिजनेस है। यस, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, बजाय हम एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, कि अगर हम बगल की एक और अच्छी कंट्री है भूटान मान लीजिए, ठीक है, भूटान का पूरा मॉडल ही CSR पे है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स पे ही काम करता है। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट कि कितना इंडस्ट्री लगा रहा है, क्या करना है, नहीं करना है। उसका मॉडल ये है कि हम खुश रहें और खुश रहने के सारे साधन करें। तो राधा मुझे लगता है कि CSR को भी हम इस तरह से एक्सपेंड करें कि कितनी ज्यादा खुशी लोगों तक पहुंचे, ना कि उसको हम बहुत सारे किरचों में, बहुत सारे खांचों में इस तरह से बांध दें कि हम CSR को ठीक जगह पहुंचा ही ना पाए। मेरा विचार तो अगर पूछिएगा तो ये है कि इसको खुला छोड़ने की जरूरत है और सच्चे दिल से सेवा करने की जरूरत है। Okay, sir. Let's talk about some relation between business and culture again. So I would like to, this is a common question for both India as well as Nepal. So as we see in Delhi as well as in Kathmandu, most of the business organization, or person who are opening business organization, they are out of Kathmandu. And they are opening business, and in most of the places there is, for example, in Nepal, in most of the places we use Nepali language, and in India we use Hindi language. So if we talk about Kathmandu, there are Newari cultures too. Is that kind of work empowering those cultures of Newars? As actually because Kathmandu is actual place for Newaris, and none of the business organization, or if we see only limited business organization, have Newari people as their head. So what about Nepal? So it depends on how much door kati kholchau ke hamle. It depends on. I would like to give you one initiative example, sir. So Kathmandu कहाँबाट गोर्खाबाट पृथ्वीनारायण शाह आउनुभयो, जित्नुभयो। सो फर्स्ट किङ अफ नेपाल, युनाइटेड नेपाल, पृथ्वीनारायण शाह, PN शाह सबै ठाउँमा जितेर आउनुभयो, काठमाडौँ आयो। काठमाडौँमा दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, एउटा कुमारी लिभिङ गडेस विषय, ठिक छ, अर्को त्यस पछाडि मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने। यो नेवारी कल्चर हो बिल्कुल। तर के गर्नुभयो, बिल्कुल यो नेपालको गहना हो, दिस इज अर्नामेन्ट, यसलाई चलाउनु हुँदैन, इन्ट्याक्ट राख्नुभयो क्या। सो यु डोन्ट से कि नेवारी कल्चर मासिन्छ भन्ने कुरो त्यो होइन। हामीलाई त्यो कल्चरली रिच छौँ, राम्रो कुरो एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र वेस्टर्नको हावा लाग्छ अलिकति बाहिरतिरको भन्ने कुरो त्यो त अलिकति थोर बहुत जहाँ पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै कुरै छैन। बट त्यसलाई कति एक्सेप्ट गर्ने, कति रिजेक्ट गर्ने, डिपेन्ड्स अन
हामी माथि पनि गर्छौँ। So talking about India, what about indigenous culture of Mumbai and Delhi, as there are lots of people from different places of India. So is there any hamper? देखिए वहाँ वहाँ तो देखिए 22 भाषाएं हैं, 122 बोली बोली आती है, 1599 क्षेत्रीय भाषाएं, तो भाषा का इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो मतलब सीधा सीधा है कि भाई आप बिजनेस करिए, बिजनेस को प्रमोट करने की पॉलिसी है सरकार की, और वहाँ पे जैसे स्टार्टअप किया गया, तो स्टार्टअप को प्रमोट किया गया, उनको हम इंटरेस्ट फ्री 3 साल देंगे, ऐसी बहुत सारी पॉलिसी को लाया गया, तो ताकि नया नया तरीके का बिजनेस लाया जाए, है ना। तो बेसिक बात यह है कि बिजनेस जितना होगा प्रॉफिट उतना होगा, और प्रॉफिट का उतना परसेंट वैसी जगह खर्चा होगा जहां पे खर्चा होने की जरूरत है। ये अल्टीमेटली ये 360 डिग्री का चक्र है, और ये चक्र रिटर्न हो करके, स्किल डेवलपमेंट हो करके अल्टीमेटली बिजनेस को ही फायदा मिलने वाला है। एक समय था जब वेल्डर्स नहीं मिल रहे हैं, आज कंस्ट्रक्शन के लिए आज भी जो है वो ना यूएई के पास अच्छे वेल्डर्स हैं, ना इंडिया के पास अच्छे वेल्डर्स हैं। स्किल डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटी। सो ये किसको बेनिफिट मिलने वाला है? ये परस्पर मदद है। कला में अगर खर्च करते हैं और अच्छे अच्छे लेखक, अच्छे अच्छे कवि प्रमोट होते हैं और वो पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, तो कंट्री का ही नाम अल्टीमेटली जाता है ना। मैसेज जाता है डाउन बिलो कि हाँ हम कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। तो मुझे लगता है कि इसका विभिन्नता से कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ मतलब है कि कितना प्लेटफॉर्म हम सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि टॉप का कमिटमेंट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका दिल, ये दोनों में सिंक होना बहुत जरूरी है, सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। Sir, we have limited time. जी जी बिल्कुल। So I have one last question. How can CSR, let's say in overall, help in unifying cultural initiative in Nepal as well as India? एक्ज्याक्टली, बहुत राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। आई अलरेडी आई थिङ्क मार्क सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स इन फर्स्ट क्वेसन्स है तपाईँलाई। सोसाइटीको नर्म्स एन्ड भ्यालुज, सोसाइटीको फिलिङ्स जबसम्म बिजनेसले बुझ्दैन तबसम्म बिजनेस सस्टेन हुँदैन। त्यसको लागि पनि सोसाइटी, वाट इज सोसाइटी? सोसाइटी भनेको कल्चर, हेरिटेज, त्यहाँ भएको बस्ने मान्छेहरूको फिलिङ्स, यो सबै चिज भन्न आउँछ। र बिजनेसले यो चिजलाई सिएसआरको थ्रु चाहे या आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र रहेर पनि रिकग्नाइज गर्छ भने त्यो बिजनेस लङ लास्टिङ जान्छ, सोसाइटीमा टिक्छ। यो जरुरी छ अहिलेको 21st सेन्चुरीमा, अदरवाइज बिजनेस चाहिँ डाउनफल हुन सुरु गर्छ। Sir, do you want to say? ऑलरेडी वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ सिनर्जी का मतलब है, और हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सीएसआर के कारण ही सिर्फ कल्चर डेवलप होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1947 के पहले जब आज़ादी चल रहा था भारत का, हमारे जो जितने महत्वपूर्ण लेखक हैं और जो भी कल्चरल रिफॉर्म्स हैं वो उस समय सबसे ज्यादा हुए मुझे लगता है, क्योंकि वेदना उतनी ज्यादा, संवेदना उतना ज्यादा था। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सीएसआर आएगा तभी कल्चर प्रमोट होगा, बिल्कुल नहीं। मैं वहां कविता लिखता हूं और निर्मेश भाई यहाँ पे नेपाल में उसका अनुवादन करते हैं, इसमें सीएसआर कहाँ है? ठीक है, सो वो ऐसा मत समझिए इस बात को। सीएसआर और बिजनेस एक हार्मोनी प्रमोट कर सकता है, कैटलिस्ट बन सकता है, बट कैटलिस्ट जो है ना वो दही में जोरन होता है, दही नहीं होता है। ये बात समझनी पड़ेगी बहुत क्लियरली, ठीक है। Thank you, sir. Thank you to both of you for your time. Thank you once again, Kaling, for giving us this opportunity. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। आप सबका जो सुन रहे हैं, थ्याङ्क यू सो मच। भर्खरै हामीले आर्टिस्टिक इन्डेभर्स, हाउ सिएसआर सेप्स एन्ड सस्टेन कल्चर एन्ड लिटरेचर भनेर सेसन भर्खरै सकाएका छौँ। यसको मोडरेटरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र ओझा, र स्पिकर्समा हुनुहुन्थ्यो प्रेम अर्याल र यतिश कुमार। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट प्रोफेसर अवधेश प्रधान सरलाई
म उहाँहरूलाई टोकन अफ लभ दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति बेला हामी कलिङ काठमाडौँ लिटरेचर फेस्टिभलको तेस्रो दिनमा छौँ र यो अन्तिम दिन हो। हामीले विविध चरणहरू सेसनहरू पार गरिसकेका छौँ। यस पछाडि हामीसँग अझै केही सेसनहरू गजलको कार्यक्रम कविताको कार्यक्रम बाँकी नै छ। यस पछाडि चाहिँ हामीहरू लन्च ब्रेक गर्नेछौँ र आफ्टर लन्च ब्रेक हामी फेरि यहीँ मिल्नेछौँ। धन्यवाद।